Good morning, class 7th. Today we'll be revising the properties which are being used in chapter number 2. So there are properties of addition. The first property for addition is x plus y is equal to y plus x. If I have two rational numbers, I'll suppose the two rational numbers are 2 and 3. Now x plus y is equal to y plus x means if I add 2 and 3, the answer is 5. Also, if I add 3 and 2, the answer is again 5. Means if I change the order of the addends, the answer does not change. Similarly, the next second property is x plus y plus z is equal to x plus y plus z. Means grouping कर रहे हैं. 3 or more numbers are there, you can group them and add them. The answer will not change. I am taking 3 numbers 2, 3 and 4. First of all, children, I do what? I add 2 and 3 and then I add 4. When I add 2 and 3, what do I get? I get 5 and here plus 4 I get 9. Now if I add 3 and 4, I take like this 2 plus 3 plus 4. Now if I add 3 and 4, I get a 7 plus 2. That again sums out to be 9. Clear? The third property is 0 plus x is equal to x plus 0 is x. Means what? अगर हम किसी भी नंबर में 0 प्लस कर दें तो आंसर कितना होगा? 0. So that is 0 is the identity element in addition. x plus माइनस x is 0. अब एक नंबर है, एक 2 है और एक -2 है. 2 और -2 को प्लस करके क्या आएगा? 0. इसलिए माइनस किसी भी नंबर का नेगेटिव लेते हैं, दैट इज नोन एज द एडिटिव इनवर्स. 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, -5 का एडिटिव इनवर्स 5. मतलब एडिटिव इनवर्स का मीनिंग है यू हैव टू चेंज द साइन. द नेक्स्ट वन इज सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन बिल्कुल उल्टा चलेगा. x minus y is not equal to y minus x. How? I have taken again two numbers 2 and 3 जो ऊपर दिए थे. 2 minus 3 will give me -1 but 3 minus 2 will give me 1. So the answer is not coming to be the same. Now and even the associative property will not hold. Identity element does not exist because 2 minus 0 तो 2 है, लेकिन 0 minus 2 क्या है? -2. राइट. सो इनवर्स भी नहीं होगा. नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन इज सेम एज ऑल द प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट इन मल्टीप्लीकेशन. x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स. x इंटू वाई इंटू जेड इज x इंटू वाई इंटू जेड. यहाँ 2 and 3 सपोज कर लो. 2 3 is 6 and 3 2 is 6. Similarly 2 3 and 4 if I suppose here. So 2 into 3 is to be multiplied by 4. So 2 3s are 6, 6 4s are 24. Similarly 2 into 3 into 4. So 3 4s are 12, 12 2s are 24. Answer comes out to be the same. Now if I multiply 1 with any number, I get the same number. So x into 1 is x and 1 into x is x. So here 1 is the identity element of multiplication. Here 0 was the identity element of addition. 1 is the identity element of multiplication. Now x into y plus z. This property, children, this property is known as the distributive property. X into y plus z is equal to x into y plus x into z. Now coming to your division properties. X divided by y is not equal to y divided by x. X divided by any rational number except 0 is equal to the rational number itself. x divided by x is equal to 1. पहले सेकेंड प्रॉपर्टी एक और बार करते हैं. x divided by any rational number except 0. x को किसी भी rational number से डिवाइड करें, 0 नहीं होना चाहिए, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? रैशनल नंबर. अब इफ देयर इज अ 0 विल गेट द आंसर 0. ठीक है. तो अगर x को x से डिवाइड करेंगे, ऑफ कोर्स आंसर विल बी 1. Then x divided by y divided by z is not equal to x divided by y divided by z. Means associative property नहीं है. लेकिन बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, x माइनस वाई डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू x को z के साथ डिवाइड माइनस x को y के साथ डिवाइड. प्लस में भी ट्रू होगा. अगर मैं माइनस की जगह प्लस कर दूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाई z प्लस x डिवाइडेड बाई
sorry, x divided by z, and it should be x divided by z and minus this, and here it should be y and here it should be z. Clear? तो अगर एडिशन होगा विल चेंज द साइन, दिस माइनस साइन विल चेंज टू, this one will change to addition sign. Clear? Thank you.